Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin live transmission. Again, this transmission will be in Urdu and English, both languages. We are going to cover variety of topics today. Today is 14th February, so happy Valentine's Day everybody out there. We are going to cover a lot of topics from Russia, Ukraine problems, where it is stand right now. Just 1 hour ago, there's news coming through, so we are going to look into that. What Fed's emergency meeting is coming up with, what kind of ideas they are coming up, and how the markets are responding to that. And then obviously what's coming ahead this week, what earning reports, what big earnings report we are looking forward that can have impact on the market. So we all going to look into all these topics in this stream, both in English first and then in Urdu. तो उर्दू के नाज़रीन आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया कि आज काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे हम। रशिया और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो किस रुख में जा रहा है, अभी कुछ घंटों पहले ही न्यूज़ आना शुरू हो रही हैं, तो उसको हम जो है उस पर नज़र डालेंगे। क्या है वो फेड्स की जो इमरजेंसी मीटिंग है उसका क्या आउटकम आया है, उसके ऊपर बात करेंगे, और मार्केट्स किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं इन सिचुएशंस को, इस पर देखेंगे। और डेफिनेटली आइंदा आने वाले वीक में जो अर्निंग्स आ रही हैं, इस वीक में अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकती हैं, कौन सी बड़ी अर्निंग रिपोर्ट्स हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उन पर भी नज़र डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। All right. So right now, I'm looking at the 4 hour chart, and I can see that there is a green signal, buy signal is just printing on, and it's not confirmed yet. We are in that candle right now, which is a 4 hour candle, and we are seeing some hope, some glimpse of upward momentum. So right now Bitcoin is just over, managing to just over 20-day simple moving average line. This is the brown line. It's just above that line. That shows a bullish movement. There is a bullish territory, but you can see how close we are, how small these candles are. I mean, all day yesterday night, I have been receiving messages. I've set some alerts on my phone, and I've been receiving messages: 3% up, 3% down, 3% up, 3% down. So that's the range, basically 3% up and down. We are right now in that kind of range because the market is uncertain, definitely uncertain. That's my thumbnail right now. Markets are uncertain, not just crypto markets, not just Bitcoin, but equity markets as well. What happened this morning? There was a huge hype created amongst a lot of people that about that Fed meeting. What they have decided, people were afraid this morning that they might decide, and this is the red candle shows in the morning that overnight people were thinking that Feds can decide to start raising rate like from today. That was the possibility. People were talking about it. What they have done, nothing actually. They agree on doing nothing actually, and nothing right now. They have already decided to start raising rates in March, so they are still stick to that timeline. Now they are actually divided, not agreeing, but divided equally among raising the rates hawkishly, like front load terms Fed's Bullard is using, that we need to front load the rate hikes, means that we need to increase rate more with more base points, not just 0.25 base point, but maybe half a point or 100 point base point. We should start raising rates like that, and then tame down toward the end of the year. So that's what he's suggesting. So similarly, there are some other people who are on the other side of the aisle who thinks that no, it will just crash the markets, and it will, in the current scenario with Russia and Ukraine, it will be a disastrous for the market. So this is also true. So they are actually agreeing on doing nothing actually
right now, and all the hype created about this emergency meeting actually gone. So it was a nothing burger. Nothing came out from that meeting or any announcement, right? So that is one thing. The other thing is that I want to look at the earning reports that are coming this week. The future of these, the earning reports, the price action can be determined by these reports. The some of the big earning report on Tuesday, Airbnb are coming up. There are big Denny's and a lot of those Marriott International, I mean, all these restaurants and big companies who are involved in resorts, they are involved with hotels, resort, all the activities like vacational activities. All these earnings are coming, and then online giant Shopify. That's on Wednesday, and then. AMC Networks, that's earning report is coming on Wednesday. Yeah. Then Cisco Systems, um, and on Thursday is the big one. On Thursday, the Walmart, the retail giant. So all these reports that will show us that how these companies are doing, especially in the lights of consumer goods. We have been talking about inflation, a lot of things about inflation. There, it's not 7.5%. We know that it's more than double what they are saying, more than 20% the inflation rates right now. Um, and these earnings of these leisure activities and these retail giants like Walmart, their earnings will show us that how much people are buying and how the things are with the consumer. So these are big indicators besides the inflation rates or unemployment rates, labor rates. They are also coming this week. So all these important reports are coming this week. Um, so let's see how these retail giants they are doing, and that will impact definitely the markets. The market will respond to them. So we have to look out for these dates and these reports. Um, and the third topic that I want to touch base is Russia, Ukraine. Um, yeah. So Russia, the CBS News just breaking this an hour ago that the Russia units near Ukraine moved into attack position. U.S. official says. So what does it mean is that they are ready to go in now. They are not waiting for Winter Olympics to finish. They are not waiting for any other thing. We were expecting actually a lot of analysts were expecting actually that last weekend they will probably move in. They didn't move in last weekend. There are still, I think, a lot of European leaders. They are in contact with the Russian president this week, today especially, and it looks like that they are getting ready to move in anytime. This news can pop up, and that will impact severely on the markets. Not just the markets, not just crypto market, but I can show you the U.S. markets, the other markets like Nasdaq, S&P, Dow Jones. Everybody was like in red, but not big time red. Just like crypto, they are just on holding position. The market, the investors are on the side, not dealing in any volume right now. Um, just a wait and see policy that they are doing, and this is the right policy, I would say, right now. They are just waiting and seeing what is going to happen. But as far as immediate concern, that was from the Fed to increase the rate immediately, like from today, is gone. It's no more there. So we could see a sudden spike in the rates, in the prices overnight today, like we are seeing right now. There's a green signal, buy signal, and it is playing out nicely. The prices are touching the maximum of the Bollinger Band right now.
So it is a possibility that they will start the prices will start come up. Um, uh, the situation is as far as right now that the people were so afraid of those rates hike that the Bitcoin was in oversold condition. Actually, the whole markets, not just the Bitcoin, whole crypto market, and all the good coins that like there's no reason, there's nothing changed for these coins to be into that low tide, but some of them are coming up very nicely, like Gala is still 12% up right now, and other coins, Phantom is 5% up, AVAX is 7% up. So some of them are rebounding back nicely, but in general, the markets are in wait and see position. There are not big moves, I would say. We might see tonight, as we are suspecting with this green AI, artificial intelligence RX indicator that is showing a buying position. There's a green dot on the momentum wave for market cipher indicator. So there are certain um, patterns that are showing us that we might go up a little bit here, but be aware it can be a bull trap, and by taking you up a little bit and everybody goes on, and on the leverage, people think that okay, markets are coming back, Fed's stuff are over, we are just going up and up now, and everybody goes in leverage positions, long leverage position, and then we'll see a big drop, gigantic drop that can happen also, especially when this kind of news is out there. It can break anytime, and at that time we'll see a huge dump in the markets. So be careful about out there. Russia, we are far from Russia, but we can see how impactful Russia is. The Winter Olympics are happening right now, and this is a 15-year-old Russian skater. Um, she was actually tested positive with a substance in December. Just a couple of months ago, she was tested positive for some doping test. So imagine that this kind of situation if happens to any other sports, to any other person. I remember for cricket, it happens a couple of times with few players. Like recently, Pakistani player was Yasir Shah. Yeah, he has to tell a lot of lies to get out from that situation. But still, he was banned for some matches. He couldn't play right after that. But the committee actually gave her, the judges gave her a green signal, green light to go on and participate in the Olympics. Um, uh, the only thing that she will have suffer, and she is a good uh, skater. I've seen her skating in Olympics. She's tremendous skater, no doubt about it. So and she is probably end up in top three or maybe at the top. But if that happens, then not only her but all the other two will not get the medals, and there won't be any medal ceremony. So that's really selfishness. If and I heard that she actually went ahead and did the performance. So after that, so she's not stepping back. She's not stepping down. I suspect that Russia's current situation has to do something with this. People don't want. There are so many people don't want to anger Russia right now for any reason. So that could be. I mean, I'm just showing you that this is how big the the two-faced world we are living in right now. That for other everybody else, things are different than if you are like from some big country who's stand off with a standoff with some small country right now, just crushing it, and people are so afraid to take the right stand against those big countries. So this is sad, but this is the reality of the life we are living in, reality of the world we are living in. Well, we are talking that we can see that going back to the charts that Bitcoin is trying to go up right now.
which is good, but again, it can be a fake out. So be careful. That's it for the English language viewers. Let me explain all this to my Urdu viewers now. जैसे कि मैंने आपने अगर विजुअल्स को फॉलो किया अब तक, मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन किस तरीके से जो है बिल्कुल एक नैरो विंडो के अंदर चल रहा था, और ख़ास तौर पे बुलिश बेरिश टेरिटरी के अंदर था. 20-day मूविंग एवरेज की लाइन थी, उसके नीचे मुसलसल चल रहा था. जस्ट नाउ 4 आवर का चार्ट है, जस्ट नाउ जो है बिटकॉइन के ऊपर ग्रीन सिग्नल आया है बाय का, और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और बोलिंजर बैंड का जो टॉप है उसको टच कर रहा था राइट नाउ. जहाँ इस वक्त बैठा हुआ है, अगर बिटकॉइन जो है वो इस वक्त, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है मार्केट्स के अंदर, एक सिम्त का नहीं कर पा रहा है, बहुत 2-3 चीज़ें बड़ी चल रही हैं इस वक्त जिसके ऊपर सबकी निगाह है. फेड्स का जो है जो डिसीजन था वो ऑलमोस्ट इस वक्त नल एंड वाइड हो गया है. बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि जो फेड्स हैं वो आज से ही इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दें. ऐसा नहीं हुआ, वो स्टिक हैं अपने टारगेट मार्च के इंटरेस्ट रेट हाइक पे, और बस इस पे अभी वो बात चल रही है कितना किया जाए. एंटिसिपेटेड पहले से एक्सपेक्टेड था 0.25 करेंगे बेसिस, लेकिन अब वो शायद कोशिश करेंगे 0.5 से करें, फ्रंट लोड करें उसको, जैसे कि फेड चेयरमैन फेड्स के जो मेंबर हैं बुलार्ड, उन्होंने कहा. आई थिंक ये मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था कि हाफ एंड हाफ है, वो इस कंसेंसस नहीं कायम हो पा रहा है इस बात पे कितना रेट हाइक किया जाए. ये कह रहे हैं कि फ्रंट लोड किया जाए, शुरू में ज़्यादा बढ़ाया जाए, फिर उसको ऐसा कम किया जाए. बाकी जो है वो करेंगे नहीं, वो उसी पे ही हम 0.25 से इशू करेंगे. और जैसे हमने सोचा था, हो सकता है नंबर ऑफ़ टाइम बढ़ा दें. पहले ये हो रहा था कि 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बढ़ाएंगे इस साल में, लेकिन हो सकता है 6 दफ़ा भी जा सकता है, 6 दफ़ा बढ़ाएं उसको, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं. तो ये चीज़ डिसाइड हुई है, लेकिन अगले महीने तक ही के लिए जो है अभी इसको कैन को किक कर दिया है नेक्स्ट मंथ पे वहीं पे. तो इसलिए ये तो एक नथिंग बर्गर हो गया, इसमें तो कुछ हासिल हुआ नहीं, कुछ आया नहीं हाथ में लोगों के. तो ये तो डेफिनेटली मार्केट्स को नीचे गिराने में नाकाम रही चीज़. मार्केट वहीं रुकी हुई थी आज दोपहर तक. इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त मार्केट्स ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं. आप देखिए किस तरीके से बिटकॉइन जो है ऊपर इसको ब्रेक कर रहा है. इस वक्त जो बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन है उसको ब्रेक करके ऑलमोस्ट 43 का हो चुका है. इस वक्त बिटकॉइन 42,900 का, 43,000 को टच करने जा रहा है. बिटकॉइन की बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है फ्रॉम 40 to $42,000, जिसको इसको मेंटेन रखना ज़रूरी है. और ख़ास तौर पे ये जो 20-day मूविंग लाइन जिसको मैं आपको बता रहा था कि इसके नीचे मुसलसल चल रहा था बिटकॉइन, जो कि एक बेयरिश ट्रेंड है. अगर इसके ऊपर अपने आप को मेंटेन रख पाता है और एक कोई बड़ा डंप हमें देखने में नहीं आता, एक कोई ऐसा इस वक्त नहीं है कि हो कि क्योंकि कोई ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ तो आई नहीं है इस वक्त के जिसकी वजह से बिटकॉइन एकदम से पम्प करना शुरू कर दिया उसने. इस वक्त कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, सिर्फ ऐसे कि फेड्स ने रेट नहीं हाइक किया आज जो कर सकते थे. इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हुई है. तो सिर्फ उस बेस पर इस वक्त इसमें इतना बड़ा जंप लेने की कोशिश कर रहा है, बिटकॉइन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, या ये एक फेक आउट है, ये एक बुल ट्रैप भी हो सकता है. तो बिल्कुल, तो बी केयरफुल रहिए. तो यहाँ पर बुल ट्रैप हो सकता है, एकदम से ऊपर ले आते रहते हैं, इसको नीचे तेज़ी से गिरा दिया जाए, और एकदम से ऊपर जाते आते और कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है रशिया से, जो कि कह रहे हैं लोग इस वक्त कि रशिया जो है वो यूक्रेन के सामने जो अटैक पोजीशन में आ चुका है इस वक्त, और किसी और भी इंटर हो सकता है. तो किसी और भी ये न्यूज़ अगर आ जाती है रशिया से, तो फिर डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप की तरफ, बहुत ही बड़े ड्रॉप की तरफ जा सकते हैं, जो कि अभी हम नज़र आ रहा है कि लोग हो सकता है फोमो इन हो जाएंगे, ओके जी फेड ने कुछ नहीं किया, लेट्स डू दैट. अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मे बी इट विल गो ऑल द वे 43-44 को टच कर दे जाके एकदम से ऊपर, और लोग जो है फोमो इन हो जाएँ और लॉन्ग लेवरेज में चले जाएँ. तो उसमें बिल्कुल फॉल मत कीजिएगा, हो सकता है एक बुल ट्रैप हो. इसको अभी ऊपर जाने दें, देखने दें कितना ऊपर जाता है, फिर उसके बाद अगर आपको ट्रेड में आना है तो फिर उसके बाद इस रेड लाइन के बाद आइएगा, अभी नहीं, उससे पहले नहीं. 44 से ऊपर जाकर अपना आपको स्टे करे अगर, और ऊपर की तरफ जाता है. अर्निंग रिपोर्ट्स जो कि इस वीक आनी है, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री से, लेजर इंडस्ट्री से रिलेटेड आनी है, एयरबीएनबी और सारे जो रिजॉर्ट्स हैं बड़े, हयात, वेन, उनकी सबकी रिपोर्ट्स आनी हैं. फिर इसके अलावा जो है वो वॉलमार्ट की रिपोर्ट आनी है, ये एक बड़ी रिपोर्ट आनी है. तो सारे रिटेल्स की इनकी रिपोर्ट्स आनी हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स, जो कि ये बताएंगे हमें कि कितना ज़्यादा जो है जो कंज्यूमर हैं वो
स्ट्रेस का शिकार हैं या नहीं है। लोग बाइंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का हमें पता चलेगा इस वीक की अर्निंग से। अगर ये पॉजिटिव आती हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव असर होगा प्राइसेस पे, टोटल इंडेक्सेस पे, तमाम चीज़ों पे। आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ ऊपर आया है, बिल्कुल इस वक्त 43,200 हो गया है और 43,300 ऑलमोस्ट जा रहा है। जैसे जैसे कि हम स्ट्रीम कर रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड्स को तोड़ता हुआ ऊपर निकल रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक है ये मूव, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप यहाँ नीचे देख लीजिए कि बिल्कुल भी इस मूव के साथ जो है वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ना होने के बराबर है बिल्कुल। इसको इसको ध्यान में रखिएगा कि नो डाउट कि प्राइसेस बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम नीचे डाउन बिल्कुल भी नहीं है। और ये ख़तरे की घंटी है कि कोई एक वेल है जो कि या एक या दो चंद वेल्स हैं जो कि इस वक्त खेल रही हैं गेम, लोगों को फोमो इन करने की कोशिश कर रही हैं, दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अब ये ब्लो अप टॉप होने जा रहा है, तेज़ी से ऊपर जाएगा प्राइस, लोग एकदम से आएंगे लॉन्ग ट्रेड्स के अंदर और वो डंप होगा फिर तेज़ी के साथ नीचे। तो ये एक बुल ट्रैप हो सकता है बहुत ज़बरदस्त तरीके का। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं कि 43,500, 43,600, 43,600 कितनी स्पीड से प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें बहुत बी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तेज़ी के साथ प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम जैसे देख रहे हैं अभी। और इसका जो अच्छा और एक नमूना होगा वो अगर हम 1 मिनट पे जाएं तो ये देखिए, ये हमें और ज़्यादा क्लियर व्यू देगा। 1 मिनट का चार्ट है कि प्राइस जो है कैसे मूव कर रहे हैं, ये देखिए। तो दिस इज़ इट। 1 मिनट के ऊपर आप देख सकते हैं एकदम से नीचे वॉल्यूम आया है और जो मनी जो का फ्लो है वो एकदम से यहाँ पर भी आया है अंदर। और बहुत जो क्रिटिकल पोजीशन है उस वक्त वहाँ पर ऊपर जाकर रिजेक्शन हुई है इसको बहुत ज़ोरदार तरीके से। बिटकॉइन जो है वो 44 तक टच करने वाला था, 43,700 तक गया है और उसके बाद बहुत क्लियर रिजेक्शन एक देखने में आ रही है। और जो कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, स्टिल इट कैन बी अ बुल ट्रैप, सो बी केयरफुल। अभी भी देखिए बुलिंजर गया ऊपर एकदम, फिर बुलिंजर बैंड के नीचे वापस अंदर आ गया। जो मूवमेंट है इसका वो एकदम बुलिंजर बैंड्स के ऊपर चल रहा है, इस वक्त लाइन के ऊपर चल रहा है। तो ये इस पर तो बहुत कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि 1 मिनट चार्ट पे तो फिर रेड सिग्नल भी आ गया है यहाँ पर। मार्केट साइफर पे आप देखिए रेड सिग्नल भी यहाँ पर इसने फ्लैश किया है अभी। वो हो सकता है पलट जाए दोबारा वापस ऊपर आए, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त मूव कर रहा है। और हम 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, हर कैंडल जो है 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली कैंडल जिस तरीके के शूटिंग स्टार इसने फॉर्म किया है, इसका जो अपर शेडो है बहुत लंबा है, नीचे बॉडी सी बहुत छोटी सी है। तो ये जो है शो करती है बेसिकली ये शूटिंग स्टार कैंडल के इट्स अ गुड, इट्स अ बैड साइन बेसिकली, कि ये ऊपर जाने की कोशिश की थी, इसने ब्लॉक ऑफ करने की कोशिश की थी, इसको रिजेक्शन हुई यहाँ पर और ये वापस जो है बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ सकता है। तो बी केयरफुल, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहिए। ये जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली वही हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको चंद मिनटों पहले बताया था वही हो रहा है इस वक्त। जैसे कि अभी आप थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिए मेरी वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने यही कहा था एग्जैक्टली कि ये जो बुल ट्रैप लग रहा है मुझे, और ये वही हो रहा है। देख लीजिए शूटिंग स्टार कैंडल ने बिल्कुल अपना काम किया। और इस मिनट की कैंडल अगर और नीचे आ जाती है तो ये इंगल्फिंग कैंडल हो जाएगी इसके अगेंस्ट में, तो वो ख़तरनाक हो जाएगी। और अगर ये इससे नीचे आती है तो या इट्स एन इनगल्फिंग कैंडल। ये जो है इनगल्फिंग कैंडल है, इससे बड़ी कैंडल है पिछली कैंडल से, और ये शो करिए कि जो बेयरिश ट्रेंड है वो वापस आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ और ये कंटिन्यू किया इसने बेयरिश ट्रेंड ने, तो ये डेफिनेटली जो भी इतने भी लॉन्ग इस वक्त आए हैं उनको जो है वो बेसिकली इसने जो है सबको लिक्विडेट कर दिया होगा। जितने भी लॉन्ग ट्रेडर्स हैं उनको वापस आके नीचे तेज़ी से ऊपर जाके 43,700 पे एकदम से 43,300 पे वापस आ गई है। और ये जो मज़ीद नीचे की तरफ ही इसको पुश मिल रहा है जो कि नज़र आ रहा है हमें मिनट चार्ट के ऊपर किस तरीके से इसको नीचे पुश किया जा रहा है। तो ये एक अजीम मैनिपुलेशन है, जैसे मैंने बताया था कि हम दोबारा 4 आवर चार्ट पे आके सिचुएशन देखें क्या है। 4 मिनट नहीं, 4 आवर। तो 4 आवर चार्ट पे अभी तक जो इस 4 आवर का की जो कैंडल है
उस पर डेफिनेटली हमारे पास ग्रीन जो सिग्नल है वो मौजूद है, और इसने बड़ा अच्छा काम किया। अगर आप इफ़ यू आस्क मी कि हम यहाँ इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे 42,400 पे, 42,500 पे थे, और इस वक्त हम 43,400 पे बैठे हैं। तो ये $1,000 की ये तो आपको ये लेवरेज में ऊपर लेके आ सकता था अच्छा खासा, अगर इस सिग्नल के ऊपर हम जाते तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इनका ऑरेक्स वालों का। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि ये 4 आवर कैंडल कहाँ जाके रुकती है, कहाँ बंद होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये एक बुल ट्रैप हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 44 को क्रॉस नहीं करने दिया इसने, और जाते जाते वापस आ गया। और ये दोनों को बेसिकली लिक्विडेट करते हैं, शॉर्ट्स को भी और लॉन्ग को भी। लोग ये भी सोच सकते हैं कि एकदम से तेज़ी से ऊपर आ रहा है, नीचे भी ऐसी तेज़ी से गिरेगा तो शॉर्ट कर देते हैं, तो उनको भी लिक्विडेट करते हैं एकदम से नीचे से ऊपर जाके या ऊपर से नीचे आके। तो इस वक्त लेवरेज ट्रेडिंग का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस तरीके का इस वक्त मार्केट हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी वॉलेटाइल हो रही है मार्केट, और कोई भी न्यूज़ मार्केट में आती है, कुछ भी आता है, तो ये भी इस चीज़ का एक इंडिया है कि अगर तेज़ी से एकदम से मैनिपुलेशन हो रही है इतने कम वॉल्यूम के साथ, तो कोई वेल कर रही है डेफिनेटली इसको। और वो वेल जो है वो उसके पास कोई न्यूज़ होगी, कुछ होगा जिसको यूटिलाइज़ करते हुए बहुत सारी लिक्विडेशंस करेगी इस वक्त ऊपर लेके जाके मार्केट को, और फिर कोई न्यूज़ एकदम मार्केट में ऐसी आएगी एकदम डंप होगा, और उससे फ़ायदा उठाएगी वो। तो कोई वेल है जिसको इन्फॉर्मेशन है जो उससे खेल रही है तो मार्केट से, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रांगली है। अगर आप पीछे चले हैं थोड़ा फरवरी में, तो ये जो आप देख रहे हैं कितना कितना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर आया था बिटकॉइन, तो वो तो फिर समझ में आता है इतने स्ट्रांगली ऊपर है। लेकिन इतने कम वॉल्यूम के साथ और इतना प्राइस एक्शन दिखाना इस चीज़ की निशानदाही करता है कि कोई मैनिपुलेशन चल रही है। आई होप कि आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को डेफिनेटली बहुत क्लोजली वॉच करें, और इस वक्त जो है वो ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रही है, ख़ासतौर पर लेवरेज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करने का। वो तो बिल्कुल लिक्विडेट कर देगी आपको किसी भी वक्त, ऊपर या नीचे बहुत तेज़ी के साथ एक्शन चल रहा है। तो एक तरह की कमेंट्री हो गई, लाइव कमेंट्री हो गई बिटकॉइन के फास्ट प्राइस एक्शन की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कल आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ न्यूज़ के साथ, कुछ व्यूज़ के साथ। और हाँ, व्यूज़ से याद आया मुझे कि कल हमने बड़ा ज़बरदस्त सुपर बॉल के जो एड्स थे उनके ऊपर बात की थी, और काफ़ी लोगों को जो है FTX का ऐड ही पसंद आया। ज़्यादातर लोगों का जो फीडबैक है वो FTX का जो कॉमेडी ऐड था वो बहुत सबको पसंद आया। कॉइन बेस की जो है वो है मिक्स है हर एक की। लोग कहते हैं कि $14 मिलियन खर्च करके उन्होंने कॉइन बेस ने एक QR कोड जो है 1 मिनट तक घुमाते रहे स्क्रीन पे, उससे बेहतर था कि वो कोई बड़ा इनाम अनाउंस कर देते, और उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बजाय ऐसे कि वो एक QR कोड पे 1 मिनट तक उन्होंने घुमाते रहे स्क्रीन पे, और उनकी साइट भी क्रैश हो गई बेसिकली। जो लोग उसको QR कोड के थ्रू उनकी साइट पे आए, तो वो भी साइट भी क्रैश कर गई थी एकदम से। तो ये लोग ये उसकी कामयाबी भी कह रहे हैं, ठीक, काफ़ी ज़्यादा लोग एकदम से आए उसको ऐड को देख के, तो ये भी है। ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है दर्शक है क्रिप्टो की, और वो सबको पता कि कॉइन बेस FTX जो है वो बड़े गिव अवेज देंगे इसके दौरान, तो हर एक कोई दर्शक है उसको फ़ौरन ही ग्रैब करने के चक्कर में था। तो बाकी दूसरे ऐड जो थे वो उनके बारे में यही है कि वो एक तरह से लोगों में अवेयरनेस के लिए अच्छे ऐड थे, ख़ासतौर पर बड़े कॉमेडी और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया गया FTX के ऐड के थ्रू। बहुत अच्छा था। उसमें लोगों को समझाया गया कि किस तरीके से लोग जो नई इनोवेशंस के अगेंस्ट जाते हैं वो किस तरह गलत साबित होते हैं अक्सर जाके आगे। तो बड़ा अच्छा ऐड था। लेब्रॉन जेम्स का ऐड भी अच्छा था, वो भी अपने बचपन के लेब्रॉन जेम्स को यही समझा रहा था कि बी बोल्ड, और वो बड़ा अच्छा मैसेज था वो भी क्रिप्टो के हवाले से। तो मिक्स बैग था बेसिकली काफ़ी लोगों का ओपिनियन, लेकिन FTX के ऐड पे मुत्तफिक थे लोग। तो आई थिंक यहाँ पर आके रुक गया है इस वक्त, देखते हैं कि क्या होता है आगे प्राइस एक्शन। आप भी देखिए, हम भी देखते रहेंगे थोड़ी देर से बाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस अगर आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो। थैंक यू।